A company manufactures and sells a product. A company manufactures and sells a product. A company manufactures and sells a product. The selling price and raw material cost. The selling price and raw material cost of which the selling price and raw material cost of which has remained unchanged, during the years the selling price and raw material cost of which have remained unchanged during the years 2019-20, 2019-20 and 2020-21. 2019-20 and 2020-21. Full stop. The following information are available. The following information are available. You will have three columns: particulars, then in the last two columns are there 2019-20, then 2020-21. Particulars 2019-20 and 2020-21. First item is quantity sold in units. Quantity sold in units. 1920, this is 100 units. 2021, this is 150 units. 100 units, 150 units. Then next item, sales value. Sales value. Sales value 1920, this is rupee 20,000. 20,000. 2021, there is a question mark. Question mark. Raw material consumed. Raw material consumed. 1920, this is rupee 10,000. 10,000. 2021, there is a question mark. 1920, 10,000. 2021, question mark. Direct wages. Direct wages. 1920, this is 3,000. 3,000. 2021, question mark. Factory overheads. Factory overheads. 1920, this is rupees 5,000. 5,000. 2021, 5,700. 5,700. Profit. Profit. 1920, this is 2,000. Rupees 2,000. 2021, rupees 2,550. 2,550. 2,550.
Next para. Next paragraph. During the year 2020-21, during the year 2020-21, the rates of direct wages. During the year 2020-21, the rates of direct wages, rates, R-A-T-E-S, rates of direct wages have increased by 50%. Have increased by 50%. And there was a saving of rupees 300. Rates of direct wages have increased by 50% and there was a saving of rupees 300 in fixed factory overheads. There was a saving of rupees 300 in fixed factory overheads. Calculate the following. Calculate the following. Number first. Total factory overheads. Total factory overheads for 2 years. Total factory overheads for 2 years under normal conditions. Under normal conditions, that is, when there is no saving in fixed factory overheads. That is, when there is no saving in fixed factory overheads. Total factory overheads for 2 years under normal conditions, that is, when there is no saving in fixed factory overheads. Number second, variable factory overheads cost. Variable factory overheads cost. Variable factory overheads cost for 2 years. For 2 years under normal conditions. Variable factory overhead cost. Variable factory overhead cost per unit कर दें. Variable factory overhead cost per unit for 2 years under normal conditions. Variable factory overhead cost per unit for 2 years under normal conditions. Number third, total variable factory overheads. Total variable factory overheads for 2 years. Total variable factory overheads for 2 years. Number fourth, total fixed overheads. Total fixed overheads in 2 years. Total fixed overheads in 2 years. Then number 6, profit volume ratio. 5 है. Number 5 लिखिए. Statement of marginal cost and profit. Statement of marginal cost and profit. Number 5th वाला लिखो. Statement of marginal cost and profit for the years. For the years ended on 31st March 2020. For the years ended on
31st March 2020 and 21 and 2021. Then number 6, profit volume ratio for the 2 years. Profit volume ratio for the 2 years. Number 7, break even point in units. Break even point in units and in rupees for 2 years. Break even point in units and in rupees for 2 years. Then next point. Sir, break even point in units and rupees? Break even point in units and in rupees for 2 years. Monetary terms में और physical terms में. Then next item. Margin of safety. Margin of safety in units and in rupees for 2 years. Margin of safety in units and in rupees for 2 years. Next item, margin of safety ratio. Margin of safety ratio for 2 years. For 2 years. Margin of safety ratio for 2 years. Then percentage of profit with sales. Percentage of profit with sales. On the basis of PV ratio and margin of safety ratio. Percentage of profit with sales on the basis of PV ratio and margin of safety ratio for 2 years. Next item, sales volume in rupees. Sales volume in rupees to earn a profit of 16 and 2 by 3%. Sales volume in rupees to earn a profit of 16 and 2 by 3%. 16 and 2 by 3%. 16 से ही 2 बटे 3%. 16 and 2 by 3% on cost of sales. Sales volume in rupees to earn a profit of 16 and 2 by 3% on cost of sales during the 2 years. During the 2 years. Next item, sales volume in rupees. Sales volume in rupees to earn a profit of. Sales volume in rupees to earn a profit of 25%. Sales volume in rupees to earn a profit of 25% on cost of sales. On cost of sales in the year 2019-20. In the year 2019-20. Next item, selling price per unit. Selling price per unit. Selling price per unit when break-even point. When break-even point is brought down to 50 units.
when break-even point is brought down to 50 units in both the years. 50 units. Selling price per unit when break-even point is brought down to 50 units in both the years. Next point, percentage of variable costs with sales for 2 years. Percentage of variable cost with sales for 2 years on the basis of profit volume ratio. On the basis of profit volume ratio. Percentage of profit with sales for 2 years on the basis of profit volume ratio. So this we have to work out. You will put the heading important calculations under marginal costing system. Important calculations under the marginal costing system. Important calculations under marginal costing system. You will have first calculation. First heading will be total factory overheads under normal conditions. Total factory overhead under normal conditions. क्वेश्चन में इन्होंने आपको दे दिया है, they have given you units sold in 100 unit and 150 unit. In 1 year 100 unit, 150. Sale value is given 20,000. Then question in 1920, raw material 10,000, 1920, direct wages 3,000, 1920. Then factory overhead for 2 years are given. 5,000, 5,700. In 2021, 5,700. And in the next paragraph they have given you that there was a saving in fixed factory overhead, 300. So normal condition means when there is no saving, तो 300 पड़ जाएगा ये. Then during the year wages rate increased by 50%. Okay, this is given. So number first calculation is total factory overheads under normal condition. You will have colon days. Then in the next line, 2019-20 equal to 2019-20 equal to, this is given rupees 5,000. In 1920 there is no problem. This is everything is normal. 5,000. Then 2020-21, 2020-21, this is equal to 5,700 plus 300. Actual total factory overhead is 5,700. And this is information is given. There was a saving in fixed factory overhead, 300 rupees. So it means total factory overhead, fixed plus variable, under normal condition, this will be rupees 6,000. First part answer is okay. Then second point, you will put the heading, variable factory overhead cost per unit under normal conditions. Variable factory overhead cost per unit under normal conditions. What is the variable factory overhead cost per unit under normal conditions? This we have to find out. Colon dash. There is a formula. Formula is equal to change in factory overheads. Change in factory overheads divided by change in units of production. Change in factory overheads divided by change in units of production. Under normal condition,
change in factory overhead will be 1000 rupees. Then in the next line, equal to rupees 1000. Normal condition in 1920, total factory overhead is 5000. In 2021, this is 6000. Change in factory overhead, rupees 1000. Divided by change in unit of production, 50 units. 50 units. 14 रुपए Eh? This is given in the question. 100 unit production, 150. So change in unit of production, 50 units. This is equal to rupees 20 per unit. 20 per unit. So there is a formula to calculate variable overhead cost per unit when you are given two levels of production and total factory overhead for two levels of production. Then the formula will be change in factory overhead divided by change in production. So this is equal to variable factory overhead cost per unit of production. So you have calculated this is equal to rupees 20 per unit. Variable factory overhead are 20 per unit in this case. Then you will put the third heading. Total variable factory overheads. Third calculation required is total variable factory overheads for 2 years. Total variable factory overhead for 2 years. Current days. In the next line, formula is equal to units of production into variable factory overhead per unit. Units of production into variable factory overhead per unit. 2019-20 equal to 100 units into rupee 20. In 1920, production and sale is 100 unit. And variable overhead cost per unit you have calculated 20 equal to rupees 2000. This is the total variable factory overhead for 2019-20. Then next line 2020-21 equal to 150 units into rupee 20 equal to rupees 3000. This is the variable factory overhead for 2021, 3000. Then next point. Now total fixed factory overhead is required in the 2 years. You will put the heading total fixed factory overheads in the 2 years. Total fixed factory overheads in the 2 years. The formula is equal to total factory overheads minus total variable factory overheads. Total factory overheads minus total variable factory overheads. Minus total variable factory overheads. What is the actual total factory overhead minus total variable factory overhead? 2019-20 equal to, this is given in the question, 2019-20 equal to 5000 minus 2000. 2000 you have calculated. Equal to rupees 3000. Now we have to see the actual position. 2020-21 वो सेविंग हो गया था तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 5700. 2020-21 equal to 5700 minus 3000 equal to rupees 2700. 2700. This you have calculated total fixed overhead for the 2 years. You have earlier calculated total variable overhead for the 2 years. Next heading, number 5. You are to prepare a statement. Okay? You will put the heading statement of marginal cost and profit.
Statement of marginal cost and profit. Next line, for the years ended 31st March 2020 and 2021. For the years ended 31st March 2020 and 2021. Then next line, output and sales. Output and sales. What has been the production and sale, both are equal. Output and sales equal to 100 units and 150 units. 150 units. You will have the columns. One column is particular, then 2019-20, two columns, rupees per unit. Then 2020-21, rupees per unit. So your columns will be, one column will be particulars, then 2019-20, this will have two columns, rupees per unit. Then 2020-21, this will have two columns, rupees per unit. In 1920, every calculation will be for 100 units. In 2021, every calculation will be for 150 units. Raw material consumed. There is no change in the cost of raw material consumed. Per unit, this will remain same because no information is given. The only change has been saving in fixed factory overhead and increase in direct wages per unit. So raw material consumed 1920, this is 10,000, per unit is 100.00. 100.00. 2021, this will be calculated 100 rupees per unit for 150 units. Total amount rupees will be 15,000. 15,000 per unit, 100.00. Then we come to add direct wages. Add direct wages. Direct wages is given 1920, 3,000. In 1920, you will note down rupees column 3,000. Per unit 30. 30.00. Wages cost has increased by 50%. Now per unit wages will be 45. It was 30 rupees per unit. Now this will be 45 rupees per unit. Now in 2021, in per unit you make the entry 45.00. Then you total amount you calculate it. 150 into 45. This will come to 6,750. 6750. ये कौन सी कॉस्ट है? Direct wages. Earlier you have written raw material consumed. Then I have told you write add direct wages. 90 अवॉइड कर दो. टोटल का लाइन खींचेंगे 1920 में 2021 में. पर्टिकुलर में लिखेंगे प्राइम कॉस्ट. Total will be called prime cost. You will underline it. Total is in 1920 13,000, 130.00. In 2021, this is 21750. 21,750 per unit. 145.00. So 19,500. 750 बोला था सर. 19,750. नहीं, how? Raw material consumed was 15,000. Okay. Or direct wages has been 6,750. So total prime cost will be 21,750. 21,750
750। डायरेक्ट वेजेस जो 3000 था वो 19-20 का था और 20-21 में वेजेस का रेट बढ़ गया 50%। तो 50% इंक्रीज हुआ था तो पर यूनिट में 50% बढ़ेगा। या आप 30 रुपए से टोटल अमाउंट निकाल लो 150 का और फिर 50% बढ़ा दो, वही आ जाएगा सेम। ओके, टोटल अमाउंट विल आल्सो इंक्रीज 50% और ये भी 150 यूनिट के लिए, ये देखना पड़ेगा। अब ऐड करेंगे ऐड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 20 रुपए पर यूनिट आया था। ऐड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स at the rate of rupees 20 per unit. Add variable factory overhead at the rate of rupees 20 per unit. Variable factory overhead will remain 20 rupees per unit. Same. There is no change. 100 यूनिट का हो जाएगा 2000. 1920 this is 2000. Per unit 20.00 और 2021 कैलकुलेट करना पड़ेगा 150 into 20. This is 3000 per unit 20.00. Again the other line of total लगाएंगे. Total in 1920 this is 15,000 per unit 150.00. 2021 total is 24,750 24750 per unit 165.00. ये जो टोटल आया है इसको पार्टिकुलर में लिखेंगे. दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स. This is marginal cost of sales or variable cost of sales. टोटल के नीचे 2 लाइनें खींच देंगे हर कॉलम में, टोटल बंद हो जाएगा. स्टेटमेंट विल कंटिन्यू. अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस और सेल्स. सेलिंग प्राइस और सेल्स. Selling price or sales, this is given in the question. Selling price is given? Given. 20,000 in 1920. Per unit this is 200.00. Selling price in 1920, this is 20,000, 200.00. और क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ जो है उसमें ये लिखा हुआ है, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड. उसमें चेंज नहीं हुआ है, तो ये फिर 200 पर यूनिट रहेगा. तो 150 यूनिट का हो जाएगा 30,000, 30,000 पर यूनिट 200.00. Selling price 1920 was given, 2021 you have calculated on the same basis because there is no change in per unit selling price. Then you will subtract less variable cost of sales. Less variable cost of sales or marginal cost of sales, same thing. Less variable cost of sales. This you have calculated. In 1920, this is 15,000 per unit 150.00. 15,000 150.00. Then in 2021 you have already calculated 24,750 24750 per unit 165.00. We will draw the line of total in all the 4 columns.
then you subtract the value. This is called contribution. Particular में लिखेंगे contribution. Sale minus variable cost equal to contribution. You will underline the contribution. In 1920, this is 5,000 per unit, 50.00. In 2021, Sales minus variable cost. contribution 19-20 में 5,000 आएगा per unit 50.00. 20-21 में माइनस कर दें. This is 5,250. 5250 per unit 35.00. 35.00. Then less fixed costs. Fixed costs you have calculated. 1920 fixed cost is 3,000. वो जो अंडर नॉर्मल कंडीशन निकाला था फिक्स्ड कॉस्ट, वो खाली वेरिएबल ओवरहेड निकालने के लिए निकाला था. चेंज इन टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. और एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है वो आपने कैलकुलेट किया है. तो 2700 2021 में आएगा 2700. Less fixed cost 1920, this is 3,000. We have already calculated earlier. Per unit 30.00 divided by 100. In 2021 fixed cost is 2700. पहले निकाल चुके हैं पीछे. और पर यूनिट आएगा डिवाइडेड बाई 150 18.00. 18.00 18 रुपए पर यूनिट. Again draw the line of total in all the 4 columns. Then in particular you will write profit. Contribution minus fixed cost equal to profit. Profit in 1920, this is 2,000. 2,000. Per unit 20.00. Profit 1920, 2,000, 20.00. 2021 profit is 2,550. 2,550. 2,550 per unit 17.00. 17.00. Then in the amount column we shall draw 2 lines. Total बंद कर देंगे. 2 लाइनें खींच दो column में. Profit has been calculated. Now the statement will be closed. Statement is prepared. लंबी लाइन खींच. अगला कैलकुलेशन क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है. नेक्स्ट हेडिंग यू विल पुट डाउन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. दिस इज नंबर 6. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो colon dash. You will underline this heading. Formula is total contribution divided by sales into 100. Total contribution divided by sales into 100. 2019-20 contribution you have calculated equal to 5,000 upon 20,000 into 100. Contribution into 1920, this is 5,000. 5,000 upon 20,000 multiplied by 100. ये बराबर आ जाएगा 25%. 25%. PV ratio in 1920, 25%. Then 2020-21. This is equal to contribution you have calculated 5,250. 5,250 divided by sales 30,000. 30,000 into 100. 5,250
upon 30,000 into 100. This is equal to 17.5%. Now we will put the next heading, number 7. You will put the heading break-even point in units. Break-even point in units. कोलन डैश अंडरलाइन करेंगे. Break-even point in unit निकालने का फार्मूला है fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost upon contribution per unit. अगर हम फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन वो ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट है. 2019-20 इक्वल टू 2019-20 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है 3,000 डिवाइडेड बाई 50. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 50 इक्वल टू 60 यूनिट्स. 60 units. So this is the no profit, no loss point, 60 unit in 1920. Then 2020-21. 2020-21 equal to fixed cost is 2,700. 2,700 divided by 35. Equal to 77.1429 units. Or you can have 14 units even. 77.1429 units. Within bracket approx. This is approximate. Then again we will have the heading break even point in rupees. Break even point in rupees. You will underline this heading. The formula is fixed cost upon PV ratio. Fixed cost upon profit volume ratio. Profit volume ratio. 2019-20 2019-20 equal to 3,000 upon 25%. 3,000 upon 25% equal to rupees 12,000. 2020-21 2020-21 equal to 2,700. Fixed cost is 2,700 divided by 17.5%. 17.5% equal to rupees 15,428.57. 15428.57 within bracket approx. Then your next point. This is number 8. Number 8. You will put the heading margin of safety in units. Margin of safety in units. You will have colon dash and underline this heading. Margin of safety in units. Formula is equal to actual sales in units. Actual sales in units minus BEP in units. Actual sales in units minus break-even point in units. 2019-20 equal to 2019-20 equal to 100 minus 60. 100 minus 60. Formula is actual sales in units minus BEP in units. In 1920, actual sale is 100 units. 100 minus break-even point is 60 units. 60 equal to 40 units. Means to the extent of 40 units you are safe.
when there is a competition in the market and sales decline, then if they decline up to 40 units, then you will be at BEP. This is the position. To what extent you are safe? Then 2020-21. 2020-21 actual sale is 150 units. 150 minus 77 approximate minus 77 equal to 73 units. 73 That is 150 unit and 150 minus 77 ब्रेक इवन पॉइंट अभी आपने निकाला है 2021 में 77.1429 यूनिट अप्रॉक्सीमेट 77 यूनिट जैसे 150 माइनस 77 यूनिट बीईपी 2021 ऊपर निकाल चुके 73 यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट यू हैव कैलकुलेटेड margin of safety means to what extent you are safe. If there is competition in the market, more manufacturers they enter into the market and your sales come down, then to what level you are safe. This you can do. You can calculate in money terms also. Next heading, margin of safety in rupees. Margin of safety in rupees. Colon dash, you will underline this heading, then formula, next line, equal to actual sales in rupees. Actual sale monetary terms में लेंगे, in rupees, minus break even point in rupees. Margin of safety in rupees equal to actual sales in rupees minus break even point in rupees. 2019-20 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपए में कितना होगा एक्चुअल सेल रुपए में आपने निकाला है अभी स्टेटमेंट में 20,000 20,000 ब्रेक इवन पॉइंट भी रुपए में ऊपर कैलकुलेट किया है 12,000 12,000 20,000 माइनस 12,000 इक्वल टू रुपीज 8,000 8,000 रुपए तक सेल अगर डिक्लाइन हो जाए तब हम बीईपी पे आएंगे देन 2020-21 इक्वल टू एक्चुअल सेल इज गिवन 30,000 रुपीज 30,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट 15,428.57 15,428.57 margin of safety in rupees this is 14,571.43 14,571.43 within bracket approx. Then next point, next heading will be margin of safety ratio. Margin of safety ratio is to be calculated. You will have colon dash, underline this heading. You will note the formula. Margin of safety ratio निकालने का formula है margin of safety in rupees. Margin of safety in rupees into 100 divided by actual sales in rupees. Margin of safety in rupees into 100 divided by actual sales in rupees. 2019-20 इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपए में अभी कैलकुलेट किया है इक्वल टू 8,000 into 100 8,000 into 100 divided by actual sale in rupees 20,000 8,000 into 100 upon 20,000 equal to 40%. परसेंटेज टर्म्स में 40% सेफ्टी है 2021-22 इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपए में निकाला था 14,571.43 14,571.43
14,571.43 into 100 divided by 30,000 equal to 48.57% approx. 48.57% approx. You will put the next heading, percentage of profit based sales on the basis of percentage of profit based sales on the basis of PV ratio and margin of safety ratio. Percentage of profit based sales on the basis of PV ratio and margin of safety ratio. On the basis of profit volume ratio and margin of safety ratio, we can calculate percentage of profit based sale. Colon dash, underline this heading. Formula is equal to PV ratio into margin of safety ratio into 100. PV ratio into margin of safety ratio into 100. 2019-20 equal to PV ratio we have calculated 25% equal to 25 upon 100, 25 upon 100 into 40 upon 100, 40 upon 100 into 100 equal to 10%. 2019-20 में जो आपका प्रॉफिट है वो सेल के 10% के बराबर है. अगर आप दिखा देंगे तो 10% के बराबर है. इंटू 100 लिखेंगे ना. इंटू 100 भी रहेगा. 25 upon 100 into 40 upon 100 then again into 100. 200 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी उधर कैंसिल होगा 10%. Then 2020-21 equal to 17.5 upon 100. PV ratio है 17.5 upon 100 into 48.57 upon 100. 48.57 upon 100 into 100. 100 कैंसिल हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाई 100 कितना परसेंट आएगा? इक्वल टू 8.5%. 8.49 आ रहा है, 499 इक्वल टू 8.5%. In 2021, whatever profit you have earned, this is 8.5% on sales. Next point क्या है? Sales volume in rupees. Sales volume in rupees to earn a profit of 25% on cost of sales. Okay. You will put the heading. You will put the heading. Sales volume in rupees. 2/3 वाला भी नहीं हुआ. 11 point था. वो होना है. पहले 25% वाला कर लो, ये आसान है. Sales volume in rupees to earn a profit of. Sales volume in rupees to earn a profit of 25% on cost of sales in the year, एक ही साल का निकालना, in the year 2019-20. क्या कराएंगे? कराएंगे तो अभी करा देंगे. 16 and 2/3 भी करा देंगे. Sales volume in rupees to earn a profit of 25% on cost of sales in the year 2019-20. In the year 2019-20. That is, इसी में आगे लिखो, that is, हमको कास्ट ऑफ सेल पर 25% प्रॉफिट देना है. इसका मतलब ये हुआ, अगर कास्ट ऑफ सेल को 100 रुपए माने तो 25 प्रॉफिट, सेल वैल्यू हो गई 125. दैट इज 25 upon 125.
on sale. 25. 25 upon 125 on sale or 0.20 on sale. आप 0.20 ऑन सेल 25/125 को सॉल्व करेंगे 0.20 ऑन सेल कोलन डेज अंडरलाइन कर दें. You want to earn a profit of 25% on cost of sale, or you can say you want to earn a profit of 20% on sale or 0.20 on sale. Sale is not given. कोलन डेज लगाइए अंडरलाइन करिए. Next line you will note down, we assume that sales are X. You will note down, we assume that sales are X. अगर सेल मालूम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Sales are X. फुल स्टॉप. इसी में आगे लिखेंगे the desired profit the desired volume of sales, profit काट दो, the desired volume of sales to earn a profit of 20% on sales, the desired volume of sales to earn a profit of 20% on sales will be calculated by the following formula. The desired volume of sales to earn a profit of 20% on sales will be calculated by the following formula. कोलन डेज. मान लीजिए हमको 15,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सेल निकालने का फार्मूला है. कोलन डेज के बाद अगली लाइन में लिखेंगे x इक्वल टू, x का मतलब सेल निकल के आएगा, x इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट divided by profit volume ratio. Fixed cost plus desired profit divided by profit volume ratio. ठीक है. नेक्स्ट लाइन x इक्वल टू 2019-20 का ले जाए. आइए 2019-20, तो 2019-20 में पीवी रेशियो कितना है? 25% है. ठीक है. अब आप लिखें अगली लाइन में x इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 3000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 0.20x. सेल का 20% प्रॉफिट लेना है, सेल को हमने x मान लिया, डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा 0.20x. This is 3000 plus 0.20x divided by PV ratio 0.25. ऐसे हो गया. अगली लाइन में इसको ट्रांसफर कर देंगे. अगली लाइन में लिखो 0.25x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 0.25x इक्वल टू 3000 प्लस 0.20x. 0.25x equal to 3000 plus 0.20x. Then the next line 0.25x minus 0.20x equal to 3000. 0.25x minus 0.20x equal to 3000. Then the next line 0.05x equal to 3000. 0.05x equal to 3000. Then x equal to 3000 upon 0.05. 3000 upon 0.05 equal to rupees 60,000. 60,000.
फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे 200 में से 25 तो लेस हो जाएगा ना? नहीं नहीं 0.25 माइनस 0.20 हाँ, 0.5 ठीक है 0.25 माइनस x माइनस 0.20 x तो 0.05 x होगा, ठीक है, इक्वल टू रुपीज 60,000। अगले पैरा में लिखिए इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दिस शोज दैट when the actual sales this shows that when the actual sales in the year 2019-20 the actual sales in the year 2019-20 are rupees 60,000 the profit earned will be equal to 20% on sales. This shows that in the year 2019-20 when the actual sales are rupees 60,000 the profit earned will be equal to 20% on sale. Full stop. This can be verified as under. This can be verified as under. This can be verified as under. Colon dash. Profit equal to profit निकालने का फार्मूला है profit equal to sales in rupees into profit volume ratio minus fixed cost. Sales in rupees into profit volume ratio minus fixed cost. प्रॉफिट निकालने का ये फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इन रुपीज इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट लाइन प्रॉफिट इक्वल टू आपने कैलकुलेशन लगाया 60,000 का सेल होगा प्रॉफिट 20% आएगा है तो प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 इंटू 25% माइनस 3,000 फिक्स कॉस्ट है 3,000 रुपए। नेक्स्ट लाइन प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 माइनस 3,000 इक्वल टू रुपीज 12,000। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिज सेल्स इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिज सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिज सेल इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल। प्रॉफिट आपने निकाला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद सेल्स अपॉन अरे नहीं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। अगर प्रॉफिट का परसेंट सेल के साथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल। अब अगली लाइन में कैलकुलेट करूं इक्वल टू प्रॉफिट हमने वर्कआउट किया 12,000 रुपए 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेल 60,000 बराबर 20%। वेरीफाई हो गया कि जो प्रॉफिट आपका सेल सही आ गया 60,000 का सेल होगा जो प्रॉफिट आएगा 20% ऑन सेल के बराबर होगा। आप कास्ट ऑफ सेल से भी देख सकते हो कास्ट ऑफ सेल निकालो कास्ट ऑफ सेल इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल वैल्यू से अगर प्रॉफिट माइनस कर दे तो कास्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कास्ट ऑफ सेल इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। अगली लाइन में लिखो इक्वल टू 60,000 माइनस 12,000 इक्वल टू रुपीज 48,000। अगली लाइन में लिखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद कॉस्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन में भी तो पूछा गया 25% होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरीफाई कर लेंगे। अगली लाइन में आइए प्रॉफिट है 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल 48,000 25% आ गया। इसका हमारा फॉर्मूला सही है
कि हमारी जो सेल निकल के आएगी, सेल को हमने एक्स मान लिया। अब आप बोल रहे हैं 20% ऑन सेल प्रॉफिट लेना है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया 0.20x। सेल निकालने का फॉर्मूला लिखा है हमने आपको कि आपको इतना प्रॉफिट लेना है, कितना सेल किया जाए, तो वो फॉर्मूला है x इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो x इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है 3000 और प्लस 0.20x हो गया अपॉन 0.25। बाकी वर्किंग आपने देख ली। अब क्या निकालना है? 16 and 2/3%। हेडिंग डालो, sales volume in rupees to earn a profit of 16 and 2/3% on sales। ये बोला ना, 16 and 2/3% on sales, नहीं कॉस्ट है, On sale. कॉस्ट ऑफ सेल है। On cost of sale. हाँ देखिए, sales volume in rupees to earn a profit of 16 and 2/3% on cost of sales, on cost of sales, that is 50/300। 16 and 2/3 को सॉल्व करेंगे, 16 से 2/3 को, तो ये हो जाएगा दैट इज 50/300 on cost of sales। कॉमा लगा के लिखो, be assume that cost of sales is rupees 300, प्रॉफिट इज 50/300 होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपए। सेल्स इक्वल टू, सेल हो जाएगी 300 प्लस 50। भाई कास्ट ऑफ सेल को 300 मान लिया, प्रॉफिट हो गया 50। कॉस्ट ऑफ सेल इज सेल वैल्यू इज 350। कॉमा लगा कर लिखे, देयरफॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज 50/350 on sale, 50/350 on sales, or 1/7 on sales। उसको सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/7 on sales, कोलन डैश लगाएंगे। अगली लाइन में आइए, we assume that sales are x, we assume that sales are x। 2019-20 का निकालेंगे पहले, फिर 2021 का बाद में आएगा। We assume that sales are x, कॉमा लगा के लिखो, desired profit equal to desired profit at the rate of 1/7 on sales equal to desired profit at the rate of 1/7 on sales equal to x/7। x/7 हो जाएगा। सेल को तो x मान लिया, x का 1/7 लेना है प्रॉफिट, x/7 हो गया। एक कॉमा लगा के लिखो, द फार्मूला टू कैलकुलेट द डिजायर्ड प्रॉफिट desired profit on sale is as under। The formula to calculate desired profit is as under, कोलन डैश। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगली लाइन में लिखो, x इक्वल टू 3,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है 19-20 का, प्लस x/7 डिवाइडेड बाई 0.25। अगली लाइन में लिखें 0.25x इक्वल टू
0.25x equal to 3000 plus x upon 7. 3000 plus x upon 7. Next line में 0.25x minus x upon 7. 0.25x minus x upon 7 equal to 3000. नेक्स्ट लाइन में आइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हैं 0.25x को 7 से, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो 1.75x माइनस x अपॉन 7 ऐसे होगा कि जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, मतलब तो ये हो जाएगा 1.75x माइनस x अपॉन 7 इक्वल टू 3000. अगली लाइन में लिखो 1.75x माइनस x इक्वल टू 3000 इंटू 7. 7 उधर चला जाएगा. 1.75x माइनस x इक्वल टू 3000 इंटू 7. अगली लाइन में आएगा 0.75x इक्वल टू 21,000. x इक्वल टू 21,000 अपॉन 0.75. x इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? इक्वल टू रुपीज 28,000. 28,000 सेल होगा तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो 1/7 ऑन सेल होगा. अब जरा आप प्रॉफिट निकाल के देखिए. प्रॉफिट कैलकुलेट करिए 28,000 की सेल पे. प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. $28,000 इंटू 25% माइनस 3,000. ये बराबर आ जाएगा 7,000 माइनस 3,000 इक्वल टू रुपीज 4,000. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड सेल निकालो. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स. प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स. 4,000 इंटू 100 बटे 28,000. 4,000 इंटू 100 अपॉन 28,000. 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 7. 100 अपॉन 7 का मतलब ये बराबर आ जाएगा 14.2857%. 14.2857%. इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 आ जाएगा. So this is proved that profit has been earned 1/7 on sales. ठीक है. अब आप इसी को उसके लिए निकालो 2020-21 के लिए. सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 16 on sales in the year 2020-21. कितने रुपए का सेल किया जाए कि 2020-21 में जो हमारा प्रॉफिट आए वो सेल पर 16 से 2/3%. नहीं, कास्ट ऑफ सेल पे. कास्ट ऑफ सेल पूछा है ना. सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 16 2/3% on cost of sales in the year 2020-21. That is 1/7 on sales. मतलब वो चीज तो वही आ जाएगी 16 से 2/3% ऑन कास्ट ऑफ सेल. इसका मतलब 1/7 ऑन सेल निकालिए. अब 2020-21 को वर्कआउट करो तो हम तुम्हें आंसर बताते हैं कितना सेल आएगा.
x equal to 2700 plus x upon 7 है Upon अपॉन 0.175 17.5% को अगर हम करेंगे तो 0.175 आएगा. This is x equal to 2700 plus x upon 7 divided by 0.175. 15,500 to 55. ये आंसर तो 84,000 रुपए आया है. आ गया. तो ये हो गया x इक्वल टू 2700 प्लस x अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 0.175. नेक्स्ट लाइन में आएगा 0.175 x इक्वल टू 2700 प्लस x अपॉन 7. नेक्स्ट लाइन में आएगा 0.175 x माइनस x अपॉन 7 इक्वल टू 2700. Point 175x minus x upon 7 equal to 2700. Next line में 1.225x 1.225x minus x upon 7 equal to 2700. Next line में आएगा 0.225x equal to 2700 into 7. 0.225x equal to 2700 into 7 equal to rupees 18,900. X equal to 18,900 upon 0.225 equal to rupees 84,000. 84,000 रुपए का सेल करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वल टू 1/7 ऑन सेल होगा. क्लियर. अगला कौन सा पॉइंट है? चल गए.